Assalamu alaikum dear students. Ajuk son topic chu loops. तो पहले रीजन में पढ़े से कंट्रोल स्टेटमेंट्स ताकि पूछा से if statement क्या गो तो तमिज वर्किंग क्या है आसान if else statement let if else header next if else and switch case statement. Everything we have discussed about the control statements in previous videos, and in today's video we are going to discuss the loops. What are loops? Why loops? And when we are going to use the loops in the programming. तो आज की सियाती वीडियोस में शो इस loops क्या गई तो loops क्या इस्तेमाल इस करन loops कम साथ इस्तेमाल इस करन तो कुछ किस्मिक loops च आसान तो कम साथ च इस एक programming means loops इस्तेमाल करन. So our topic is loops in C. Loops in C. क्योंकि अच्छे पर C programming तो C programming क्या गई loops? Actually, what are loops? Loops are when we are going to execute the same set of instructions. When we are going to execute the same set of statements repeatedly, that means again and again, then we are going to use loops. Yes, come again and again, set of instructions in the program. Again and again execute yasan karan again and again asan se repeatedly kasan se execute tam sat istemal karan loops go loops kya gayi loops these are one of the most important features of C language or rather any programming language. Loops are used when the statements are going to execute repeatedly ye repeatedly kasan repetition se kasan akai kam se again and again kasan repeatedly kasan se kam tam sat karan istemal loops. So far as C is concerned, CS means different. There are three different types of loops in C. There is while loop, do while loop, and for loop. So, yes, अगर real life में show real life example आपने loop है मुझे for example अगर ऐसे आप इसे school सोन for example तो इसे ऐसे कमरा इसे आप school ऐसे main building school तो ये तीन chairs थे मस for example it's 30 chairs ऐसे 10 थे मस तो ये अच्छे ये chair इनसे main gate पे इनसे main gate पे इन chair अच्छे इन chair aspect तो नहीं इनसे ऐसे school ऐसे मुझ बात करूँ इसके कारण कम अच्छे pianist बनान कि main gate पे से chair तीन मंजो तीन तरजो ये बात ना हो school ऐसे मुझ pian क्या इसका गवर्नर चीज़ decide करान main gate पर कि अगर चेयर तुलित है बकुचा चेयर है एट अ टाइम तुलित फॉर एग्जांपल इस तुला अख चेयर फॉर एग्जांपल इस चक्कर अख चेयर एक साथ तुलित गो स्टार्ट करानी एक चेयर पे इस अख चेयर तुला यतनस सचवात नवा यतनस त्रावन यतनस बेच का सा यतनस आज तुला बे चेयर त्रावन यतनस बेच का सा यतनस बेच गो आई इस वाला इस 2% तक कंटिन्यूअसली यह कर का सा यतनस आज तुला चेयर बात यतनस गसान यतनस अट तुलान चेयर वातान यतनस गसान अट तुलान तो तान रोजान यवान तो गसान जो तान यतनस ये चेयर मकलान छे दैट मींस नंबर ऑफ चेयर्स यतनस 0 छ बनान या यतनस तान यतन चेयर 30 छ गसान गो अगर आख चेयर यतनस तुलान सुच तान यतनस देम चेयर छनान ये गसान ऐड यत ब्याक चेयर त जवान ब्याक चेयर त्रेम चेयर छ गसान गो स्टार्ट छ करानी अक चेयर पे ते एंड छ गसान 30 चेयर्स पे इसमें त्रिम चेयर छु वातनावन या डेस्टिनेशन पे वो अकै काम छि रिपीटली गसान इस रियल लाइफ एग्जांपल में इस करन तो यम चीज ये स्टेटमेंट हावले खत प्रोग्रामिंग में देयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंस्ट्रक्टर इन सी दैट इज द लूप्स विद द हेल्प ऑफ लूप्स वी आर गोइंग टू instruct the computer do such kind of statements repetitive statements iterative statements this one या लूपिंग गेटिंग बनावस गो अगेन एंड अगेन कह काम करने खतर रिपीटली काम करने खतर करा इस्तेमाल लूप्स. ओके होप कि तय समझ कि मेन क्या लूप्सन मेन कंसेप्ट क्या लूप्सन तो अगर वो अत गई स्टार्ट गसान गो गो स्टार्ट एक चेयर पे पे चेयर पे 2 3 4 तो एंड 30 चेयर्स पे गो अस कर ये फिक्री कि प्रत कुछ लूपस यम सात कह लूप
ات سٹارٹنگ पॉइंट ते एंड पॉइंट दोनों चीज गो इनिशियलाइज कर चेयर पे वातान 30th चेयरस तक गो देर इज बोथ द स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल एज द एंड पॉइंट ऑफ दिस लूप गो ये चेयर अनान यह स्टार्ट पे दम चेयर अनान त्रेम चेयर अनान तोतान रोजान यह चेयर पकनान बॉडी चेयर बॉडी अमिक चेयर और पकनान अनान गो तोतान रोजान यह अकै करान गसान अनान चेयर गसान बे वापस अनान चेयर रूपस मज गसान योतान यह अमिस 30th चेयर ओतस वातान या योतान ये स्टार्टस नंबर ऑफ चेयर बनान 0 ओके तो बॉडी बॉडी क्या करान दिस अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ लूप्स सो फार एज प्रोग्राम इज कंसर्न्ड योतान प्रोग्राम ताल्लुक अख एग्जांपल निम फॉर एग्जांपल अगर बच्चस यसान पन नाव प्रिंट करना बच्चस यसान कि आउटपुट गस मिल स्क्रीन प्रोग्राम मे गस आउट माय नेम इज यूसुफ बच्चस यसान यह आउटपुट बस यसान यह आउटपुट स्क्रीन पे करूँ अम खुद प्रोग्राम बना बह लिख हैश include stdr.h hash include conio.h void main सादरी देखानी यहाँ क्लियर स्क्रीन प्रिंट है print my name is Yousuf. My name is Yousuf. That's it. वो आप लागू ताकि प्रोग्राम देखना है इंस्ट्रक्ट आप एग्जीक्यूट ये आप स्टेटमेंट लोग में इस प्रिंट करें my name is Yousuf क्या प्रिंट आप इस कम है डिस्प्ले करें प्रिंट करें नमन दोन my name is Yousuf गस प्रिंट इसी मगर अगर नेक्स्ट करूँ बच्च यसान नसा मोन नाव गस स्क्रीन पे प्रिंट गसन 5 times I want to display my name on the output screen 5 times using C बट क्या करें नस कम सिंपली बकर कम चूंकि प्रिंट एप कम चाहिए बजाक प्रिंट एप my name is Yousuf print एप my name is Yousuf print at my name is Yousuf arzu that suwa print at my name is get ch When we program that, with the help of this small program, my output would be known output as my name is Yousuf 5 times what again. My name is Yousuf. It's one way through which by which I can display my name 5 times on the computer screen on the output screen. You should often. मगर अगर मैं यह select करूँ 100 times या 100 select या 1000 times, I want to display my name, I want to print my name on the computer 1000 times. तो मैं शुद्ध 100 select लिखूँ print या my name is print पर अक्वार statement से actually ने execute करूँ इसमें 100 select लिखूँ. अगर इस वुचो 100 select लिखूँ या 100 select लिखूँ अक्वार instruction again लिखूँ instruction इस बासान थोड़ा यह बेस्ट प्रोग्रामिंग बासान क्या यह रीडेबिलिटी बासान क्या गो ये सोन प्रोग्राम सह रोज रीडेबल क्या सह रोज अंडरस्टैंडेबल क्या तो बे खे टाइम कंज्यूमिंग प्रोग्राम यह बन टाइम खे वारिया टाइम इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज ड्रॉबैक्स द लूप्स आर बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्पस तो अमे खतर करान इस्तेमाल कम लूप्स ओके तो सो फार एज सी इज कंसर्न्ड
there are two different categories of loops. They categories is loop and अगर इस loop करो broadly classified, they किस्मिक loops छ आसान उसको क्या क्या छ आसान बहुत पहले वो गोना थोड़ा सी फिक्री what are loops? Loops are those statements which are used to represent the iterative statements in the programming. Yeah, when we want to execute the same set of programs, same sort of instructions again and again in the programming, then we use the loops. Tam such current istemal come loops. So there are two different categories of the loops. First one is the entry controlled loops, and second one is the exit controlled loops. Entry control loops क्या गए तो exit control loops क्या गए. Entry control loops गए team loops. यमन start से condition check गसान check before the execution the body of the loop. The condition, the test expression is going to be checked in entry controlled loops. So you see entry control loop which आसमान दाई किस्म के loops आसान आप सब वहाँ for loops हों तो बेश आप जाओ while loops हों. These two loops, for loop and while loop, belongs to the entry controlled loops. Whereas back loop you should do while loop that belongs to exit control loops. अगर वही क्वेश्चन ही वो से do while loop कुछ loop छु do while loop is the exit control loop. क्या है? In this type of loop, first the body of the loop is going to execute at once, then the condition is checked. That means the test expression is checked at the end of the loop. While in case of these entry control loops, the test expression is going to be checked at the beginning of the loop, and depending upon the test expression, whether the test expression evaluates true or false. If the text expression evaluates true, then the body gets executed. Otherwise, the body does not get executed. In case of these entry control loops. Whereas, in case of exit control loops, the body of the loop gets executed at least once, even if the test expression evaluates false. This is the main difference between the entry controlled and the exit controlled loops. So, there are two loops which belongs to entry control loop. These are the for loop and while loop. And do while loop which belongs to the exit control loop. The practical loop is true. Every loop is true. Every loop contains 4 parts. 4 parts. Every loop contains 4 loops. Whether it is a for loop, whether it is a do while loop, or it is a while loop. Every loop contains 4 parts. First one, initialization. Practical loop is initialization. Second one, test expression या condition windows or condition. Third one, body of loop. And fourth one, updation of counter. या windows increment or decrement. That means every loop in C, whether it is a for loop, whether it is a do while loop or a while loop, contains 4 parts. First one is initialization, second one is the test expression, third one is the body of the loop, and last one is the updation of counter, या increment या है decrement. Okay. तो यसमें one example हो witness कि अगर ऐसे real life में मुझे वस one witness real life में मुझे चैलेंज में example करने पोट
नम 30 चेयर्स यतनस वातान स्कूलस मज गोडनेथ इनिशियलाइजेशन मे वो प्रथ कुन लूपस 4 पार्ट इनिशियलाइजेशन टेस्ट एक्सप्रेशन या कंडीशन वन में बॉडी that means body is the statements group of statements the main logic is asli logic is काम है of the program that is the body of loop and last one is and next one is the operation of counter ठीक है so far as this example is concerned there are 30 chairs which one we have to take from the gate of the school to the स्कूल बिल्डिंग यदन क्या काम कर गोडनेथ इनिशियलाइजेशन युस पियान यह कर इनिशियलाइज कि बह चेयर तुल फॉर एग्जांपल अम तुल चेयर गो इनिशियलाइज कर फॉर एग्जांपल ए चेयर ए अहद इनिशियलाइजेशन यह चेयर तुलान गो स्टार्ट कर गो डेट इज स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट कर बह चेयरों सर स्टार्ट चेयर तुझन दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन फर्स्ट वैल्यू विच वन वी हैव टू गिव इनिशियलाइजेशन से जरूरी वी हैव इनिशियलाइज देयर गो इनिशियलाइज कर चेयर ये चेयर तुझन अम पे टेस्ट एक्सप्रेशन यह चेयर तुज वात कतनस यतनस स्कूलस नश ओके ये गो 1 ये गो स्कोर 1 ओके ये स्कोर 1 गो यह गो इनिशियलाइज पे यह कर टेस्ट एक्सप्रेशन यह कर चेक क्या यह तकन बे चेयर कि वन मकले तम वेदर अगर ए टोटल नंबर ऑफ चेयर 30 वेदर चेयर तक कि ना अगर चेयर तक क्या 30 आस चेयर तकनस अगर 30 आम तेल गि तौर कह तिक तक चेयर कहें अगर वन अम कहें कर गो चेक बे टेस्ट एक्सपीरियंस यह कर चेक कि क्या यह मे 30 चेयर आम मकलाया मे कि ना अम मकलाया वनकस कहें तेल क्या तेल बॉडी बॉडी क्या यह तुलान चेयर यह तुल चेयर ब्या ओतन गतनस ये मगर ये ब्या चेक यतनस ओतन आये ऑपरेशन ऑफ द काउंटर ये ग प्लस ये अगर यपर करो ये गह माइनस ये ग प्लस बे कर कैंशन चेक अके साथ कर इनिशियलाइजेशन से गसान ओनली वंस सोची लूपस मो चाहे वाइल लूप आसो डू वाइल लूप आसो फॉर लूप आसो इनिशियलाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली वंस अकि लट कोर सही बतल चेयर गोडनेथ अम पे पकनान त्रावान सह अनान ब्या पे अनान ब्या इनिशियलाइजेशन ओनली वंस वन गि इनिशियलाइज कर कह यह कत गि गए तस बे कर मा 30 ना वन आई 30 योतन आई जु यह कर चेक योतन आई जु यह गए वापस अ तुल बे चेयर ठीक ये चेयर तुम अन सा यतनस त्राय यतन ब्या योतन वात बे कर अपडेट ऑफ द काउंटर यह कर अपडेट यह कर प्लस गजरा गई 3 गई 3 बे कर चेक ना 30 वन आई 3 योर यह गए अन ब्या वात यतनस बे कर अपडेट यह वन 4 बे गस वापस वो 4 वन आई 4 आई वन बाकी ते 7 यह गि बे तथनस यह अन बे गो यह रोज अपडेट कर अस तो इतन फिक्री कि इनिशियलाइजेशन स्टार्ट से कोर सह कर दैट एक्सप्रेस ओनली वंस याद थो यह टेस्ट एक्सप्रेशन यह गसान ना दैट विल डिस्कस लेटर इन द help exam ते करो लेटर एग्जाम को यतन तो फिक्री एवरी लूप हैज 4 पार्ट्स प्रत्येक लूप अच्छे कुछ पार्ट 4 पार्ट ऑफ इनिशियलाइजेशन टेस्ट एक्सप्रेशन बॉडी ऑफ द लूप तो ऑपरेशन ऑफ द काउंटर तो इनिशियलाइजेशन के गसान ओनली वंस तो नो वन एग्जांपल तो चाहे वाइल लूप या फॉर लूप या डू वाइल लूप्स तो तकन वन बक नम कस एग्जीक्यूट गसान ओके सो मे वन युस हसा वाइल लूप्स there are 2 categories there are 2 categories of loops so yes मुझे 3 किस्म के loops को while loop for loop तो do while loop मगर ये यम करो कैटेगराइज इन 2 कैटेगरी में गसान डिवाइड करन बिलोंग आगो एग्जिट कंट्रोल लूप्स ब्यागो एंट्री कंट्रोल लूप्स एंट्री कंट्रोल लूप गस लूप ये टेस्ट एक्सप्रेशन छ गरे गसान चेक एंट्री कंट्रोल तो पछ गसान बॉडी एग्जीक्यूट while in exit control loop छु या फिर do while loop यवन छ तछ गसान बॉडी एग्जीक्यूट अच्छ गसान या सही टेस्ट एक्सप्रेशन चेक लास्ट से गसान ताकि टेस्ट एक्सप्रेशन चेक सो
Let us see exit control loop and body control loop with the help of the flow chart. Is बनाओ flow chart दुश्मनी हूँ exit control loop ते entry control loop बन होते. What is बनाओ is entry control loop flow chart. ठीक है ना. Flow chart शु इसके गवर्नर शु initialization करने से initialization. The initialization gets it. Empath gets it. Test expression. Yeah, condition. Test. Expression. अगर ये ट्रू गई इवैल्यूएट body of the loop gets execute empath gets it operation of the counter अगर ये फॉल्स गो ऑक्टर लूप है इंस्ट्रक्शन ऑक्टर लूप स्टेटमेंट्स This is the flow chart of entry control loops. Godnathi gets initialization इसके में वो चेयर नम्स इसके में चेयर हिंस कास्ट कर initialize करिए आप चेयर तुलिए आयत में कोई चेयर तुलिए जो तुलिया त्रा तुलिया इके गोना decide first value दिमोता एम्पथ क्या कर टेस्ट है इके क्या चेयर छाता है अगर चेयर आस if there are other chairs text expression जो है if there are chairs अगर चेयर तक chair तेल क्या करेगी को वो अगर true गो चेयर definitely true if this text expression evaluate is true तेल करेगी को तेल के body of the loop है तेल का सीधा anyway chair वो न करी chalk ता chalk के नच अगर check तेल आएगी ओके ये लाइन पद कर अपडेट अगर 5 आसन एनिमल बेन आप 5 आसन कर बे अख ऐड तिम बनन शे या अगर ज आने 5 आसन कर ज ऐड तिम बनन 7 बे गस वापस बुझ बे टच छा चिया गुमा रोज के अगर वस के तेल आने युसा आने किसा खाली फुट कुसा गेने जमा बे कर चा गुमा रोज के गो ये रोज कराना तो तन अगर ये बॉडी एक्स या सो ये टेस्ट एक्सप्रेशन evaluate true. So in case of entry control loops, the body of the loops executes only if this test expression evaluates true. Body से तेली का सामान execute यदि test expression का evaluate true. Otherwise, अगर वो ये false गई, that means chair synthetic ही नहीं. ये क्या चाक chair छन? अमिस वो नहीं मैं खुद इंचे chair की मन से. मगर ये वो तो दोपन तक chair है, तक निम्न से तक आपसे की है. ये क्या वो ने चाक test if there are chairs, अगर chair तक chair, ये ना तक किन chair, false, that means no, false को, you go chair का तक किन, तेल क्या कैसे को, तेल करने ये क्या, ना कैसे body ना अन्य में इसके ना करें update, ये कर नियर या पर जो तुम control सारे एमी body में नहीं आवर, ये वाली after loop, एम पद क्या करो मासे तिकारिये, chair है नहीं क्या बाल क्या करो मासे, reality में, इतना कैंचु, सोनी सेलेस करो इस्तेमाल निशान while loop या true while या मुझे फोर लोपस मुझे ताकि ताकि असल पर ज्यादा बना स्थिति तो दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ देयर entry control loops that means whether it is a for loop or a while loop दोनों for loop थे while loop तो ये फ्लो चार्ट
गो यतन तो ये एंट्री कंट्रोल लूपस मज अख मुझे तेली बॉडी गसन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स ऑफ द बॉडी गसन एग्जीक्यूट तेली यदि टेस्ट एक्सप्रेसिव वैल्यू गसे ट्रू in case the test expression evaluate is false the body does not get executes body can execute ki body cannot be executed session gasan execute any body ki but the control goes outside the body of the loop control gasan ke both loop never and the body never this is all about the flow chart of the entry control loop hope ki taya samajh yakmus ke entry control loop chahe for loop chu ya while loop chu ye ken chu kom kar I'm put below is graph flow chart. You can graph one graph using the categories and open things such as exit controlled loops. Exit controlled loops. That which actually call a loop, so go do while loop. Exit controlled loops. Another flow chart. What is the initialization? After initialization, body of the loop. After body of the loop, there may be updation. Yeah, what the updation of counter. Then there is the test expression. Test expression. Three letter. अगर I test expression true गई, then control goes in body of the loop. अगर ये false गई, then control goes in house outside body of the loop. Outside loop. This is a flow chart. Flow chart of exit control loop. Flow chart of exit control loop. Which is क्या कहते हैं? One is the initialization and part is body of the loop execute. Part is updation of the counter. Part is test expression. Tell you, अगर यह है उसमें उन्नीस में example, अच्छा 30 chairs, इसे बात नहीं school असमस, मुझे क्या कहते हैं असमस? गोंडत क्या चीज़? Initialization. Initialization मतलब वो ये कोई decide नहीं करते chair छानने, गई, ये कोई गोंडे की बकस है, नया में ब्रोथी, हम फोन में chair छे, गैटस ने तीन pianos. You can come, you should want to basan to the chair, it can decide. Go and initialize basan to the chair. Okay? That. And but क्या come? Body of the loop. You go totness. Body. You go by cutness. And come body of the loop. Well, asli come क्या चीज़? Come चीज़ असली ये. And इसे chair आने. Get it better. School style. Get it better. You go come करने. मगर यम chair शायद ना तुझी मत करने. मैं बोलियो मैं उसमें देखिस नखरस. Them already in chair. Tuj months. Pat में ये निस्ते. You go to the end of bands chair. I'm going inside basan chair. I'm going panjasi ban chair. You go in. Totan to chair आने. Touch and chair. यदि totan go. Body of the loop. You go totness. Chair करने update ते कोने basan आज chair. अच्छा स्थिति ही. जैसे I'm going सही. I'm pat कराएं. Test अच्छा कराऊँ ये चाक. Touch and chair किसी. Go क्या चाक. Initialize करें बॉडी को सही में बांध दिया एम पर कहते बॉडी से सी एम से गसन ततनस क्या करनी चेयर यू गो ततनस जाइनिस हेगस निश मगर एक्शन चेयर छन किहिन टेस्ट एम पर अच्छा एक्शन चेयर की गो इज फॉलेस कंडीशन हम शुमे वास्तव में नियर आउटसाइड लो पात क्या कौन छस का चेयर से की ममा नहीं की वो दिन बात ही कम करे मगर टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉलेस
chair आसने तक कहीं मगर इस पर तोड़ गसन अगले क्या जे अम कर पतस चेक करनस अगर गोड़े गयो चेक करने chair छतनस तकनस गोड़े आसे मिस पता अच्छा chair गोड़े करा कंडीशन चेक तेल गसान मिस तेल ओस मिस तेल अगर तक आसन कहीं या नहीं मगर इस पे गोड़े ततस गसन पत was खाली वापस क्या तक आसन chair की आई मतलब गो Yousuf exit control loop जो अखने क्या गसान काम अखने क्या गसान काम यस टेस्ट एक्सप्रेशन छे इसे गसान चेक एट द एग्जिट पॉइंट क्या लूप से गसान स्टार्ट ये गसान खत्म and लास्ट से गसान ये टेस्ट एक्सप्रेशन चेक कंडीशन चेक while as Yousuf entry control loop was just M.4 तब से गसान स्टार्ट से गोड़ टेस्ट एक्सप्रेशन तो क्या अगर सर ट्रू गई तेली गस बॉडी एग्जीक्यूट अदरवाइज गसान के मगर ये छ बॉडी ऑफ द लूप गसान तो एटलेट एग्जीक्यूट even if the test expression evaluate is false. That means in case of this exit control loop, the body of the loop executes at least once, even if the condition evaluate is false, even if the test expression evaluate is false. अगर ये test expression false क्या है तब बावजूद छ evaluate गसान body of the loop execute. In case of exit control loop, while as in case of entry control loops, there first the condition is checked, then on the basis of result of that condition, that test expression, it will be decided whether the body of the loop will go execute or not. If that expression, if that condition evaluate is true, then only the body gets executed. Otherwise, the body of the loop gets skipped and the control goes out of the body of the loop. So now we never get something. Okay, are you getting? This is the main difference between the exit control loops and entry control loops. Hope कि तया समझ के loops क्या गई तो ये कम साथ से इस्तेमाल करें तो कुछ किस्मिक loops छ आसान मैं उन दो कैटेगरीज जिस करो दोन कैटेगरीज loops आसान entry control loops छ आसान तो exit control loops आसान छ entry control loop मन छ आसान for loop तो while loop while as exit control loop मन छ आसान do while loop तो loop सुनने गर्न थी उस टाइम साथ loop इस्तेमाल करान ये साथ आजकल काम repeatedly again and again आजकल का कई काम एक दोहराओ repetition यह मजा से ताकि से iterative को वर्क आजकल ताकि से करान इस्तेमाल काम loops in order to make the program readable and in order to make the program understandable, and it has been found that the programs using the loops gets have a faster execution. Timan cha variya तेज execution गसान यमन मज loops इस्तेमाल करान छे कि हो कि तया समझ के basic concept behind of loops क्या छ इंशाल्लाह in next video तक में पारावस next video मज पारावस while loop क्या गो do while loop क्या गो for loop क्या गो तमिक working क्या छ आसान इंशाल्लाह that will be discussed in the next coming videos with the help of the example and these flowcharts and as well. Hope कि तया समझ and till next video. Bye and take care.